अगर सुबह सुबह किसी छात्र की ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखने को मिले तो आज कोई ना कोई परीक्षा निश्चित है उसकी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मुसाफिर मेडिक। सुबह 5 बजे सोकर उठ के पढ़ने का सोचा था, पर सुबह 5 बजे वाले अलार्म को तो भाव भी नहीं दिया। अभी बज रहे हैं 8:30, 9:30 बजे एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम क्या है, मेडिसिन की पोस्टिंग ख़त्म हो रही थी तो महीने के आखिर में वो एंड पोस्टिंग लेते हैं, तो वही एंड पोस्टिंग है। तो अब 1 घंटे में क्या ही उखाड़ लेंगे, बढ़िया नाश्ता वाश्ता करके चलते हैं, बाकी सब राम भरोसे। तो हर पोस्टिंग की आखिर में एक एंड पोस्टिंग एग्ज़ाम होता है जिसमें कि इंडिविजुअली सबको एक इंडिविजुअल केस मिलता है और उसकी हिस्ट्री टेकिंग एग्ज़ामिनेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस सब कुछ प्लान करके केस शीट लिखकर हमारे को प्रेजेंट करना होता है। और फिर गुरुजी आते हैं बड़े प्यार से लेने के लिए वाइवा। उसी एंड पोस्टिंग की मेडिसिन का एंड पोस्टिंग है आज, तिथि आ चुकी है, जा रहे हैं देने गुरुजी को। So the case was of a hypertensive patient, and the patient was mainly there was no clinical findings as such, but yeah, a pallor was there and there was some kind of hypertensive situation, what we suspected. We took the BP and it was 140 over 100, and previously during admission it was 180 over something, what the patient said. So otherwise the symptoms were mainly a fever, lose motions for 20 to 25 times a day, then vomiting, severe vomiting, and there was no such GI findings or respiratory cardiology. So what we suspected was it was a renal case, and we can't actually diagnose a renal case, CKD or AKI, just by examining. So we need investigations. So whatever we got in the findings, we will just present. Let's see. और उसके बाद जा रहे हैं भाई रीनल बायोप्सी देखने। Just the pallor was there. Under the eye also, no chylomicronia. I think there was platinum. I can say that it was platinum. Yeah, definitely there was pallor. You can check the hands. What exactly we do once we check for the lower conjunctiva. After that we check below the tongue, and there is also like light color, if you see. And after that we check for this piece, palmar piece. So usually it is comparatively darker than the surrounding, and in those patients it's lighter. You can see it. So it was lighter. There was no tenderness at all. And CKD patient doesn't present with tenderness. It's all correct. It is AKI. I'm just asking because there might be an overlap here. Remember chronic and there's an acute or chronic thing also. Because we had fever and shit. So there is fever and shit, but if CKD, if the kidney is fibrosed, shrunken or something like that, sclerosed, after that, in AKI, if there is AKI, I don't think there can be a I was there in nephrology postings. I had nephrology postings for around 20 days. Yeah, in elective. So the patient was only CKD, AKI, and this nephrotic syndrome, nephritic syndrome, all this. So their presentation was not like that. They will be tenderness, nothing like that. why did we have that severe low motion? Why didn't we go to a hospital? They are not those rich colors.
I mean, I understand because, but then 20 to 25 times you're taking yourself. Up to for like 12 days or Patient, if a lower income patient, if he's not severely dehydrated or a serious, like something bleeding or some chest pain, something severe, he won't present in the hospital. 12 days is enough for whatever you do. 20 to 25 is all. They don't consider sometimes loose motions as a medical problem. Seriously, they don't consider sometimes. He is actually legit, but yeah, most people don't consider loose motions as a problem. Differential diagnosis, we could have suspected a GI thing also. Yeah, they can suspect definitely. There can be like diarrheal cause, Yeah, infectious diarrhea. infectious diarrheal cause. So ecothyroid, there's no history of traveling, so nothing like that. Cholera, you can't suspect it. Viral diarrhea can be there. Any surgical side, they I guess you have a little spread for the biopsy. Biopsy. No, I mean, you might get a scar now. There's no scar for the biopsy. There's just around 16 to 15 days they hope a cylindrical thing was removed from the kidney. They can, because here the renal transplant, comparatively cheap. The patient has two options. With renal replacement therapy, like three options mostly, and there are merits and demerits of therapy. So there is hemodialysis, there is peritoneal dialysis, and there is renal transplant. Renal transplant is best among all those. So if both the kidneys are impaired, renal transplant is better. Otherwise, the patient can live a long life with the Dialysis itself is a very annoying in the long term thing. Every medical procedure is annoying one for the patient. If they increase in number and size, they can create again potential cardiac problems. There are complications, man. That's why renal transplant is better, but we can't afford. There, the renal transplant is much cheaper compared to the Bangalore or something. Obviously, it's cheaper than this like prominent cities. There it is around 25 lakhs. Here it is around 6 to 8 lakhs. पोस्टिंग ख़त्म हो गई, क्लास ख़त्म हो गई, अब इत्मीनान से बैठे हैं हम और हमारी कॉफ़ी के साथ। यार बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि यार जो व्लॉग है वो थोड़ा लंबा बनाओ। यार कैसे बनाऊँ, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो ज़्यादातर समय जो होता है वो किताबों के सामने गुजरता है। अगले 15-20 दिन के आसपास कुछ खास होगा नहीं ज़िंदगी में, बस भाई पढ़ेंगे, कभी कभी पूरी रात पढ़ेंगे और फिर जाके एग्ज़ाम देंगे, सुबह फिर लगेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि MBBS के एग्ज़ाम्स के बीच में एक दिन के भी गैप नहीं होता। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कभी कभी तो संडे को भी लगातार एग्ज़ाम्स होते हैं। और बस सुबह एग्ज़ाम देकर आना होता है, शाम को पढ़ना होता है, रात को पढ़ना होता है, फिर अगले दिन एग्ज़ाम। पर हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कुछ टिप्स नहीं कहूँगा कि कैसे इन एग्ज़ाम्स कैसे कोप अप करते हो, आसानी से रिटेन हो जाए चीज़ें, तो इन सब का बारे में टिप्स थोड़ी दे सकता हूँ मैं बीच में कि भाई इसमें नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवाइज़ कैसे करते हैं जल्दी। और जब सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कैसे कंडेंस करके कम समय में उसको रिवाइज़ करते हैं। तो ये छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इन कुछ आने वाले दिनों में।
कमेंट में बताना यार अगर चाहते हो ये सब तो। आज ट्रेन करेंगे मेनली लैट्स और बाइसेप्स। दिन की हुई समाप्ति, बाकी लाइब्रेरी से लौट रहे थे, अभी बज रहे हैं 11। चलिए